Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. And today's session, आज हम लोग बच्चों बात करेंगे about a topic, and that topic is called SSL, or we can sometimes pronounce it as TLS. So we are going to talk about बच्चों SSL and TLS in today's session. We are going to talk about SSL and TLS. So when we talk about the SSL stuff, so SSL stands for Secure Socket Layer. And when we talk about the TLS, so TLS stands for Transport Layer Security. So actually बच्चों SSL and TLS का main aim क्या होता है हमारे पास? The main aim of SSL, या you can call it TLS, इन दोनों का मेन पर्पस क्या होता है हमारे पास? टू ट्रांसमिट द डाटा सिक्योरली. हम अपने डाटा को सिक्योरली ऑथेंटिक मेथड के थ्रू प्रॉपर्ली अपने डाटा को क्या करें, ट्रांसमिट करें. दैट्स द मेन एम ऑफ either you are using SSL or TLS बच्चों. So just give me a minute. Okay, so I was telling you people कि what's the main aim of SSL. So बच्चों, the main aim of SSL is authentication, of sender and receiver. And the second most important point of SSL या TLS is encrypt the data that is being sent, that is being transmitted. So बच्चों, दो मेन पर्पस होते हैं हमारे पास के ऑथेंटिकेशन करना सेंडर और रिसीवर की. And second one is the second main point, the major point is encryption of the data. So these are the two major points whenever we are using the TLS and the SSL. अब अगेन बच्चों, पूरा मेथड आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं मैं यहाँ पे कि हाउ एक्चुअली TLS या SSL वर्क्स. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन बच्चों, सबसे पहले क्या होता है आपके पास? दिस इज द सेंडर साइड.
दिस इज योर सेंडर साइड। सेंडर साइड के ऊपर आपके पास क्या होता है, आप अपने वेब ब्राउजर के अंदर में एंटर करते हैं यूआरएल, एंटर URL of any of the web server of any of the website। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, you enter URL in your web browser। At the receiver side, this is our receiver side। किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी पॉइंट अनक्लियर हो बच्चों, फील फ्री टू राइट ऑन द चैट ऑप्शन, मैं चैट के ऊपर लिख के पूछ लेगा। Now what you did, you entered the URL in the web browser, और जैसे ही आप लोगों ने ये URL एंटर करा अपने वेब ब्राउजर के अंदर, so your web browser requested the server। अच्छा, we are assuming that on the receiver side we are having a server। एक सर्वर है आपके पास, क्या है हमारे पास, we are having a server। any of the website you want to access, कोई भी आप लोग को वेबसाइट एक्सेस करनी है तो वो भी सर्वर होता है आपके पास। तो एनीथिंग दैट यू वांट टू एक्सेस, दैट इज अ सर्वर। तो ये आपका वेब ब्राउजर जो है स्टैंडर्ड साइट का रिक्वेस्ट करता है फॉर establishing to establish connection। लेकिन साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करता है जो मैं आपके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, दैट कनेक्शन शुड बी सिक्योर। सो मुझे सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। I want to access secure web pages। I want to access secure web pages। Just give me a minute बच्चों। ओके हाँ, वेयर आई वाज। तो मैं आप लोग को बता रहा था बच्चों एसएसएल और टीएलएस के बारे में कि हाउ द कनेक्शन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। तो हम लोग अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने। अच्छा, ये एसएसएल टीएलएस आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी आप लोग वेब पेज या कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो साथ में आप लोग के पास लिखा हुआ आता है दैट दिस वेबसाइट इज सिक्योर, या उसके यूआरएल के अंदर लिखा हुआ आता है HTTPS। या फिर आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा देयर इज अ ग्रीन पैडलॉक, एक ग्रीन पैडलॉक बना हुआ होता है आप लोग के पास। तो एक्चुअली दैट ग्रीन पैडलॉक इज रिप्रेजेंटिंग दैट स्टफ। ये ग्रीन पैडलॉक भी आप लोग को बता रहा होता है दैट दिस वेबसाइट इज ऑथेंटिक, दिस वेबसाइट इज सिक्योर, दिस वेबसाइट इज परफेक्ट टू रन। हर चीज वेबसाइट की क्या है, सिक्योर है, परफेक्ट है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है ऑफ दिस वेबसाइट।
ठीक है। सो होता क्या है आपके पास, सेंडर साइट के अंदर आप लोगों ने क्या करा, यूआरएल के अंदर आपने वेब ब्राउजर में आपने एंटर करा अपना यूआरएल, रिक्वेस्ट गई टू एस्टेब्लिश अ सिक्योर कनेक्शन, सिक्योर वेब पेजेस। तो बच्चों सर्वर रिसीवर क्या करता है आपके पास, रिसीवर बोलता है कि भाई आई एम ऑथेंटिक, मैं बिल्कुल सिक्योर हूं, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक हूं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, इफ यू डोंट बिलीव मी, अगर आप मुझे मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते, सो टेक माय डिजिटल सर्टिफिकेट along with along with public key as well। अब बच्चों पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट अ डिजिटल सर्टिफिकेट। सर ये डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? बिफोर वी टॉक अबाउट दिस डिजिटल सर्टिफिकेट, मेरा आप लोग से सवाल है एंड आई वांट एवरीवन टू आंसर। बच्चों लेट्स से एक बच्चा था हमारे पास, एक बच्चा था हमारे पास, एंड दैट स्टूडेंट was having some symptoms of flu, fever, cough। तो हमें यहाँ पे इस बच्चे का कोरोना टेस्ट करवाना था बच्चों। तो आप लोग बताएं कहां से करवाएंगे कोरोना टेस्ट इस बच्चे का? फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू टेस्ट फॉर कोरोना ऑफ दिस चाइल्ड? अच्छा जी, मुझे बताया गया कि सर लैब। तो रूबा बेटा फ्रॉम विच लैब? मतलब लैब तो बहुत सारी हमारे पास कराची के अंदर, बहुत सारी लैब्स है हमारे पास इन कराची। सो फ्रॉम विच लैब? जो भी नियर हो, कन्वीनियंट हो। अच्छा ठीक है। अब देखिए होता ये हमारे पास, आपको भी पता है कि अगर मैं कोरोना की रिपोर्ट लेकर आऊं अपनी फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और मैं एक और रिपोर्ट लेकर आऊं फ्रॉम आगा खान, सो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है आप लोग ज्यादा ऑथेंटिकेट किसको करेंगे? आगा खान की लैब की रिपोर्ट को, बिकॉज दैट इज a non-profit organization, third party organization, private organization, and you know the protocol that they observe, how they apply the testing, how they create the reports। So we always we हम लोग क्या करेंगे, आगा खान की रिपोर्ट को ज्यादा फेवर करेंगे, ज्यादा यकीन करेंगे आगा खान की रिपोर्ट के बारे में। तो बच्चों सिमिलरली हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिस तरह जैसे आगा खान है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास एक एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। जो ये डिजिटल सर्टिफिकेट क्या करती है, रिलीज करती है। ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करती है आपके पास, ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स रिलीज करती है। और दिस डिजिटल सर्टिफिकेट इज एक्चुअली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसीवर, कि भाई मैं ऑथेंटिक हूं, मैं परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई एरर नहीं है। सो ये आपके पास ये सर्टिफिकेट ये एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो भाई आपका रिसीवर क्या करता है, बोलता है भाई ये लो, टेक माय डिजिटल सर्टिफिकेट अलोंग विद, ये अपनी पब्लिक की भी बच्चों सेंड करता है, अलोंग विद द पब्लिक की टू द सेंडर। तो ये सेंडर को दो चीजें सेंड करता है, एक तो डिजिटल सर्टिफिकेट, along with
द पब्लिक की, अपनी पब्लिक की सेंड कर देता है। नाउ ये दोनों चीजें बच्चों रिसीव होती हैं आपके पास, और ये रिसीव होती हैं आपको, किसको रिसीव होती हैं? आपके वेब ब्राउजर को। नाउ द वेब ब्राउजर, अब वेब ब्राउजर क्या करता है? ये सर्टिफिकेट जो सेंड कर है, इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है, चेक करता है। इस सर्टिफिकेट को क्या करेगा बच्चों? आपका वेब ब्राउजर चेक करेगा। चेक डिजिटल सर्टिफिकेट, मैं प्रॉपर लिखवा दूं, सॉरी, वेब ब्राउजर चेक करेगा। वेब ब्राउजर checks for digital certificate, एंड ऑफ कोर्स बच्चों ये रिक्वेस्ट करेगा, किसके थ्रू चेक करेगा? ये सीए को ही रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो मेरे पास डिजिटल सर्टिफिकेट आया है, either this digital certificate is authentic or not. वंस बच्चों, वंस ये डिजिटल सर्टिफिकेट ट्रस्टेड हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है कि भाई ठीक है, ये जो इसने सर्टिफिकेट सेंड करा है सर्वर ने या रिसीवर ने, this certificate is perfectly fine, perfectly balanced, perfectly good. So once the digital certificate is trusted, the next step is, आपका सेंडर क्या करता है? आपका सेंडर टेम्पररी कीज क्रिएट करता है। क्या करता है? टेम्पररी टेम्पररी सेशन कीज क्या करता है? क्रिएट करता है। अब आपके सर्वर ने बच्चों दो चीजें सेंड करी थी आपको। वन वॉज द डिजिटल सर्टिफिकेट अपने ऑथेंटिकेशन करने के लिए, एंड द अदर वन बच्चों वॉज द पब्लिक की। तो अब आप लोग पब्लिक की यूज करते हैं, सर्वर की, और इन टेम्पररी सेशन कीज को क्या कर देते हैं? एनक्रिप्ट कर देते हैं। सो वी एनक्रिप्ट दिस टेम्पररी सेशन कीज विद द पब्लिक की ऑफ द सर्वर। तो सर्वर की पब्लिक की से आप इसको क्या करते हैं? एनक्रिप्ट कर देते हैं, एंड यू ऑब्टेन, अब आपके पास क्या आ गई? यू ऑब्टेन encrypted session keys. You obtain encrypted session keys. Now these encrypted session keys are again transmitted to the receiver. ये encrypted session keys बच्चों क्या की जाती हैं? ये सेंडर को, रिसीवर को सेंड कर दी जाती है। अब at the sender side, these encrypted session keys are decrypted, एंड बच्चों अब मुझे बताएं ये किससे डीक्रिप्ट की जाएंगी? ये किससे डीक्रिप्ट की जाएंगी? किस की से डीक्रिप्ट की जाएंगी?
आपके सामने पूरी डायग्राम है। आई वॉन्ट योर आंसर्स। ये किस की से डिक्रिप्ट की जाएंगी? चलें, अभी ने एक आंसर तो बता दिया, अभी योर आंसर इज राइट, लेकिन हाफ राइट। प्राइवेट की, किसकी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट की जाएंगी ये बताओ, ये बताएं बेटा। ईदर द प्राइवेट की ऑफ द सेंडर और द प्राइवेट की ऑफ द रिसीवर। परफेक्ट, थैंक यू अब्दुल्ला बेटा, मुर्तजा बेटा। यहाँ पे सेंडर ने तो पब्लिक, जो आपको पता है मैंने बताया था, जिस पब्लिक की से एनक्रिप्ट होता है उसी के प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। तो अगर ये पब्लिक की सर्वर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया गया तो सर्वर की ही प्राइवेट की से क्या किया जाएगा? डिक्रिप्ट किया जाएगा। और प्राइवेट कीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब ये पब्लिक की इसने सेंड करी थी आपके सर्वर ने, तो प्राइवेट की ऑलरेडी स्टेप ने पास रखी थी, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। सो अपनी प्राइवेट की से इसने क्या करा? इसको डिक्रिप्ट करा। अपनी प्राइवेट की से क्या करा? इसको डिक्रिप्ट करा। एंड वंस दे आर डिक्रिप्टेड, सो अब बच्चों आपके पास यहां पे भी क्या आ गया? यू आर हैविंग टेम्पररी सेशन कीज। So now you are having temporary session keys at both places. Sir, both places matlab you are having temporary session keys at the sender side and you are also having temporary session keys at the receiver side as well. At both places you are having these temporary session keys. तो बच्चों SSL एक्चुअली करता क्या है? ये जो आपकी कीज है ना, अगर मैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात करूं, यू पीपल नो कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग पब्लिक की सेंड कर देते। तो पब्लिक की को हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं अब इस केस के अंदर, एसएसएल या टीएलएस के अंदर, हम की को भी एनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं। आप लोगों ने कंसर्न रेज करना था ना, सर पब्लिक की अगर हैकर ये पब्लिक की हैक कर ले तो वी आर गॉन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अब इस की को भी बच्चों क्या कर रहे हैं? एनक्रिप्ट करके सेंड कर रहे हैं इन एसएसएल या यू कैन कॉल इट टीएलएस एज वेल। सो बच्चों अब आपके पास क्या हुआ? आपके सेंडर के पास भी पब्लिक की है, आपके रिसीवर के पास भी पब्लिक की है, दोनों के पास सॉरी टेम्पररी सेशन कीज है। अब आपका रिसीवर क्या करता है? आपका रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट को ऐसी एक रैंडम एक्नॉलेजमेंट को क्या करता है? एनक्रिप्ट करता है यूजिंग द टेम्पररी सेशन की से। और ये टेम्पररी सेशन, ये एक्नॉलेजमेंट जो एनक्रिप्टेड एक्नॉलेजमेंट है, ये सेंड कर देता है सेंडर को, जैसे एनक्रिप्टेड एक्नॉलेजमेंट। और रिसीवर क्या, सेंडर क्या करेगा बच्चों? इस एनक्रिप्टेड एक्नॉलेजमेंट को डिक्रिप्ट करेगा अगेन यूजिंग सेम टेम्पररी सेशन की से। अगेन यूजिंग सेम टेम्पररी सेशन की से क्या करेगा? इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। एनक्रिप्टेड acknowledgement will be decrypted using the session keys because these temporary session keys were placed at both the place। और बच्चों जैसे ये डिक्रिप्ट हो जाएगा आपके पास, now you are having end to end encrypted session established between the sender and the receiver। So let me give you a quick recap। मैं पूरे इसका रिकैप करवाता हूं आप लोगों को। सबसे पहला स्टेप वॉज, द फर्स्ट स्टेप वॉज, वेब ब्राउजर ने क्या करा था? यूआरएल एंटर करा था बच्चों, एंटर द यूआरएल इन द वेब ब्राउजर। देन आपके पास बच्चों रिक्वेस्ट गई थी,
request for the establishment, request for the secure web pages. In the third step, web सर्वर ने या रिसीवर ने डिजिटल सर्टिफिकेट along with its public key सेंड कर दी थी to the web browser or to the sender. In the fourth step, web browser ने चेक करा कि सर्टिफिकेट सेंड किया है मुझे, either this certificate is authentic or not, and once the certificate was authentic, then temporary session keys were generated at the sender side, और सर्वर की पब्लिक की से हमने इनको क्या करा, एनक्रिप्ट करा, एंड वी ट्रांसमिट द एनक्रिप्टेड सेशन कीज टू द सर्वर. सर्वर ने क्या करा, अपनी पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट करा, एंड नाउ वी हैव द टेम्पररी सेशन कीज एट बोथ द एंड्स, at the receiver side and at the sender side, both the ends. Then using the temporary session keys हमने एक acknowledgement निकाली, and we transmitted the encrypted acknowledgement to the sender. और sender ने अगर ये decrypt कर लिया using the same temporary session keys, अब देखिए हम लोग session keys ट्रांसमिट नहीं कर रहे, हमें ये डर था ना कि रास्ते में जाते हुए कीज हैक हो सकती हैं, तो नाउ वी आर नॉट ट्रांसमिटिंग द कीज. अब हम लोग कीज बार बार ट्रांसमिट नहीं करेंगे, और हम लोगों ने जब की ट्रांसमिट भी करी थी तो वी ट्रांसमिट द एनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ द कीज. कीज को भी हमने फर्दर एनक्रिप्ट कर दिया था बच्चों. अब रिसीवर रिसीव करेगा बच्चों आपके पास, अगर ये डिक्रिप्ट हो गई आपके पास, सो दिस मींस अब आपके पास एंड टू एंड encrypted session establish हो जाएगा between the sender and the receiver. So this is how बच्चों your SSL या TLS works. Now we have questions. Let me starting with the questions. एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पे, सर टेम्पररी सेशन कीज जनरेट करने के बाद रिपीट कर दें, when digital certificate was authentic. अच्छा ठीक है. So when digital certificate बच्चों was authentic, so हमने सर्वर की पब्लिक की से क्या किया था, अपनी टेम्पररी सेशन कीज को एनक्रिप्ट कर दिया था, and then we transmit the encrypted session keys to the server. सर्वर ने क्या करा था, अपनी प्राइवेट की यूज करते हुए यूजिंग इट्स ओन प्राइवेट की इसको डिक्रिप्ट कर लिया था टेम्पररी एनक्रिप्टेड सेशन कीज को, और अगर ये डिक्रिप्ट हो गई तो नाउ आपके पास दोनों एंड के ऊपर सेंडर और रिसीवर साइड पे टेम्पररी सेशन कीज आर नाउ एस्टेब्लिश्ड. फिर हमने क्या करा, हमने एक ऐसी एक्नॉलेजमेंट ली, एक ऐसी मैसेज लिया, रैंडमली एक मैसेज, और उसको टेम्पररी सेशन कीज से क्या करा, एनक्रिप्ट करा, एंड वी ट्रांसमिट दैट मैसेज टू द रिसीवर. अगर ये एनक्रिप्टेड एक्नॉलेजमेंट डिक्रिप्ट हो जाएगी यूजिंग द सेम सेशन कीज, सो दिस मींस नाउ हमारे पास एंड टू एंड बच्चों एनक्रिप्टेड सेशन क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया है. एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सेशन इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड. अब हम लोग जितना भी अपना डाटा आगे ट्रांसमिट करेंगे, सो वो डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा बच्चों यूजिंग द सेम टेम्पररी सेशन कीज. नाउ अब एसएसएल बच्चों यहाँ पे एंड नहीं होता हमारे पास, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी शुड नो. सबसे पहली चीज दैट आप लोग को पता होनी चाहिए यहाँ पे, द हेडर ऑफ एसएसएल. The header of the SSL. So when we talk about बच्चों the header of the SSL, yeah, you can say the header of TLS, yeah, SSL, both are same. So this is how your header looks like बच्चों. We are having two layers.
The first layer is called handshake layer, and the other layer बच्चों is called record layer. Handshake layer के अंदर बच्चों we are having further protocols. The first protocol is called handshaking protocol. The next protocol is called alert protocol, and the last protocol is called cipher change protocol. And in the record layer we are having only one protocol, that is called record protocol. Now हैंडशेक लेयर का बच्चों अपना रूल है एंड रिकॉर्ड लेयर का अपना रूल है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हैंडशेक लेयर के आपके पास मल्टीपल रोल्स होते हैं दैट यू शुड नो. लाइक दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, मैं यहां बना देता हूं. दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर end-to-end connection. This layer is responsible बच्चों for encryption and decryption of data. This layer is responsible for alerting user if server is not secure. एंड रिकॉर्ड लेयर के बच्चों आपके पास सिर्फ दो ही रोल है मेजर. द फर्स्ट रोल इज, ये लेयर डिसाइड करती है हाउ डेटा will be formatted. And another role this layer बच्चों do, that is contains data to be transmitted. So ये layer के roles आप लोग को बच्चों पता होने चाहिए कि we are having different types of layers. हैंडशेक लेयर एंड रिकॉर्ड लेयर एसएसएल और टीएलएस के अंदर हैंडशेक लेयर के आपके पास these are the roles and रिकॉर्ड लेयर के these are the roles. These are the protocols that are inside and what are the roles of those layers. ये आप लोग को पता होना चाहिए. Now moving further forward बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. Now you should know the application of SSL and TLS ये यूज कहाँ की जाती है. ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. एप्लीकेशन of SSL या फिर you can call it TLS. So when we talk about SSL and TLS stuff, so they are generally used बच्चों for online banking. They are used in online shopping. They are used in cloud storage. Almost they are used everywhere up nowadays. Sending and receiving documents, for emails. So there are multiple applications of SSL and TLS. Now बच्चों, let's see the difference between, अब आपको difference भी पता होना चाहिए between SSL and TLS. So SSL
and we have TLS. So you should know the difference between both. इन दोनों में बच्चों आप लोगों को difference पता होना चाहिए between SSL and TLS. You should know the difference. So when we talk about SSL, बड़ा simple difference बताऊं तो बच्चों SSL अगर आपके पास iPhone X है, so TLS is iPhone 13 Pro Max. So simple words के अंदर एडवांस वर्जन है और कुछ नहीं है भाई. It's an advanced version of SSL. Advanced version of SSL, and of course it will be more secure. और एक फिनोमेना बच्चों आपके पास सिर्फ TLS के अंदर होता है, that is not available in SSL, and that phenomena is called only available in TLS, and we call that phenomena as बच्चों session caching. That phenomena is called session caching. So now let's talk about the session caching. Session caching होती क्या है हमारे पास? So when we talk about the session caching बच्चों, session caching के अंदर क्या होता है आपके पास? It takes a long time to create a SSL या फिर you can call it TLS session. ये सेशन एस्टेब्लिश करने में बच्चों बहुत टाइम लगता है. यू कैन सी ये पूरा जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, so it takes a long time to establish this connection. So with the help of session caching, we can resume our previously connected session. So बच्चों that's the beauty, that's the advantage of SSL कि सेशन कैशिंग की हमारे पास अवेलेबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है कि अगर आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो जब आप बाद में एक दो दिन बाद रिकनेक्ट करना चाहें, सो नाउ यू कैन रिज्यूम द सेशन. आपको वापसी पूरा वो ऑथेंटिकेशन और वो पूरी साइकिल रिपीट नहीं करनी पड़ेगी इफ यू आर यूजिंग TLS. ठीक है. सो दैट वाज ऑल बच्चों अबाउट SSL एंड TLS. आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हुआ होगा. कल की क्लास के अंदर हम लोग अपना वेडनेसडे की क्लास के अंदर हम लोग अपना आखिरी टॉपिक कवर अप करेंगे ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी. the first topic that we are going to cover, that is called quantum cryptography, and the next topic बच्चों is called how to obtain digital certificate. So ये दो टॉपिक्स हमारे पास अभी रिमेनिंग है इस चैप्टर के. So we are going to cover these topics इंशाल्लाह ताला on coming Wednesday. आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास के अंदर इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. Sir, I want to ask something at the end of the class for sure. Ruhul Amin, please feel free to ask. पूछो.
तुमने लेट ज्वाइन किया बेटा, बहुत ही ज्यादा। पूछो जरा क्या पूछना है। रुहुल अमीन बेटा, आई एम वेटिंग, व्हाट यू वांट टू आस्क, पूछो। ड्यू टू सम रीजन, तो ठीक है, सो देन हाँ हाँ, इट विल बी, नो इश्यूज एट ऑल। और मुझसे डिस्कस कर लेना वैसे, व्हाई यू आर गिविंग दैट पेपर इन अक्टूबर नवंबर, मुझसे डिस्कस कर लेना, मुझसे रीजन डिस्कस कर लेना। और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे टिल अक्टूबर, नो इश्यूज एट ऑल। और कुछ अपडेशन भी आएगी, कोई चीज भी होगी तो वो भी मैं आपको पोर्टल के ऊपर अपडेट कर दूंगा बेटा, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अभी है, प्लीज व्हाट्सएप पे बेटा मुझे मैसेज कर देगा। सो with the grades, with the breakup, with the components, with the other subject grades as well, so that I can guide you बिल्कुल properly, मैं आपको गाइड कर सकूं। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे वेडनेसडे वाले दिन आगे कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।